Let's start with the first section. This is the basic terminologies which are used in the RO system. Let's first get familiar with those terms which are used in the RO. This is a very basic thing that when we will talk about the performance of RO plant and the basic terminologies, you should be well aware of it so that you can develop a good understanding with my presentation. Normally, RO, we have the three main components. One is the feed, other is the permeate, which is the product water, and the next stream is the reject. These are the continuous stream, and the feed of RO is made through the high pressure pump, and then it passes through the RO membrane, which is housed in the pressure vessel. And from the center, we have a permeate water, which is basically product water having low TDS. The units which we use for the measurement are different. Professionals use a different units, but just to give you the familiarity with the units, they are cubic meter per hour, tons per hour, liters per hour, gallons per hour, gallon per minute, and gallon per day. These units are mainly used in the RO terminology. Now, we come to the recovery. First, we have learned about the feed, permeate, and reject streams. And now the main thing is recovery. Recovery is basically, it is the ratio of the product water versus the feed water. Percentage recovery, you can see this formula is equal to the permeate flow divided by the feed flow into 100. I have created example. You can see here, if we are feeding 100 cubic meter per hour of water and it has a TDS of 1000, at 75% recovery, if we have the membranes modules there as RO plants, the product water will have 75% recovery, means 75 cubic meter product, and its TDS will be around, as per design projection of the around 10.92. And all the salt will be passing in the reject water. 25% is the reject, which is in this case is 25 cubic meter per hour, and its concentration will be around 3,966.8 ppm. This is how all TDS are rejected from the feed to the reject, and only you can see the TDS passage in the product is very minor, which is 10.92 in the system, and this is called the permeate or the product water. Now, another term which is used in the RO system, that is the path length, element path length. You can see I have just illustrated this in कुछ diagrams मैंने आपके लिए बनाई हैं. You can see इसमें pressure vessel है, ये जो आपको first ऊपर नजर आ रहा है, और ये module 1, 2, 3, 4. These are the membrane in one pressure vessels, and this is its path length is 6 because the feed water is passing through the 6 membrane elements, 1 to 6. This is path length is 6. If we have 2 pressure vessels and we are feeding the parallel water in both pressure vessels, this is the feed source, and this is the first pressure vessel, this is the second pressure vessel. Both vessels are having the 6 modules. It means the path length, in this case, either 2 pressure vessel we have, this will be 6 as well. And this is the third case you see on the right side on the bottom of your screen, that if we have even 3 pressure vessels in the first stage, it will also call the path length, give you the path length 6. Now, how we can increase the path length and the recovery, we will come to the next, on the next slides. Now, you can see, in this case, we are feeding water. In first stage, we have 2 pressure vessels. Each pressure vessel has a 6 membrane. In the first pressure vessel, we have a 6 membrane. In second, we have a 6 membrane. Now, the product from the first is being collected
and the reject from the first two pressure vessel is being fed to the second stage. In this case, the water is passing through six, in the first stage membranes and the six in the second stage. It's the path length is 12. This is the path length. It is 12 in this case. In the element path length 18, the example. If we have three-stage system, we have stage one, same six membrane housed in each pressure vessel. And in this case, first stage has a three vessel, second has a two vessel, and third has a one vessel. It means that water is passing from these three stages, and each stage has a six membranes pressure vessels. The 6 into 3, it is the 18 path length. If you have, suppose a pressure vessel of 2 membrane, 3 membrane, 4 membrane, or 5 membrane, up to 8 membrane, you have the pressure vessel, and the staging will determine the path length. If you have, for sake of argument or the better understanding, in the first stage, if you have the four membranes in one pressure vessel, here 4 as well in second, and in third 4 as well, and the 4 into 3, it will be around 12 path length, and the path length is basically related to recovery of the system. Now see, what is the impact of the path length? Path length basically determines the recovery of the system. From the single membrane, you can have a maximum 15% recovery. From the two membranes, which I have shown in a pressure vessel, I have shown you the 6, but if you have a membrane housing or the pressure vessel of the two membranes, you can have a recovery of 20 to 30%. Likewise, as the path length increases, you can see the recovery of the system increases. In a single stage, you cannot have the more recovery than as determined in this path length. Now, the membranes, another term which is used in the membrane technology or in the design, that is the membrane flux. Membrane flux is basically the water permeate flowing. Permeate, we have the two streams, one is the product and one is the reject, and the first one is the feed water stream. That is the product water flowing per unit area of the membranes. And this flux is very important for in the design of RO plants, and its measuring units are GFT or LMH, gallons per square feet per day, or liters per hour per square meter. In the GFD, जो फ्लक्स रेंज है वो डिफरेंट टाइप के वाटर्स के लिए डिफरेंट है. अगर हम सपोज डीप वेल वाटर ले रहे हैं तो उसमें हमें फ्लक्स रेंज जो है रखना है 18 से 22 जीएफटी. शैलो वेल वाटर है तो 16 से 18. दीज आर द गाइडलाइंस, बिकॉज व्हेन यू डिजाइन ए गुड सिस्टम, जितना फ्लक्स लो होगा उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्म करेगा और इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा. आप देखें कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को व्हेन वी रिसाइकल वेस्ट वाटर को, तो उसमें हम, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो देन वी गो फॉर द लो फ्लक्स 8 to 12, and you see in the surface water it is 12 to 16. Now, another term which is used, which is a key important factor in the performance of RO plant, and which most of our professionals, they are not aware of that, that is SDI, Silt Density Index. It is a measurement of fouling potential of suspended solid. आपके जो फीड वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो आपको डिटरमिन करते हैं उसकी एसडीआई को. बट दीज पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई. इट इज नॉट मेजर कि ये नहीं, आप सस्पेंडेड सॉलिड को नहीं आप कह सकते कि वो एसडीआई को कंट्रीब्यूट करते हैं. उसको हम टीएसएस में लेते हैं, जो हमें नेकेड आई से सस्पेंडेड मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकल नजर आ जाते हैं. और ट्यूबिडिटी भी जो है, जिस तरह हम देखते हैं कैनाल वाटर में
कि जब रेनी सीजन में वो टर्बिड ज्यादा हो जाता है, तो टर्बिडिटी और सस्पेंडेड सॉलिड दोनों डिफरेंट हैं फ्रॉम एसटीआई। एसटीआई बेसिकली फाइन पार्टिकल्स को, जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आते, उसको मेजर करती है, और एसटीआई ही डिटरमिन करती है कि आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ क्या है। और एसटीआई को हम अगर लेस देन, जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर हैं वो नॉर्मली रिकमेंड करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट एसटीआईज, और जो आरओ के लिए है वो लेस देन 3 एसटीआई इज प्रेफर्ड, कि जी कि आप अपने पानी की प्री ट्रीटमेंट इस तरह से करें कि आपको एसटीआई लेस देन 3 अचीव हो। अब जब एसटी, थोड़ा सा एक कंपैरिजन का चार्ट मैंने बनाया आपके लिए जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर एसटीआई इज लेस देन 1 तो मोस्ट प्रोबेबली कोलाइडल फाउलिंग नहीं होगी, और आपकी मेम्ब्रेन क्रीलिंग हो सकता है, आपका उसका टाइम बहुत ज्यादा हो जाए, मीन कि आपको विद इन 6 मंथ 1 ईयर आपको करना पड़े। अगर आपकी एसटीआई फीड में, एसटीआई है क्या, बेसिकली मेम्ब्रेन जो है वो एक मॉलिक्यूलर सीव है। मॉलिक्यूलर सीव मीन कि जिस तरह हम घर में, और मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हम आटे को छानते हैं और उसमें से जो पार्टिकल हैं, या लैब में हम सीव एनालिसिस करते हैं, तो कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उस सीव से निकल जाते हैं और बड़े रिटेन रहते हैं। तो एसटीआई भी ऐसे ही है कि जब हम 5 माइक्रोन का कार्टेज फिल्टर भी लगाते हैं, तो जो 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स भी कुछ पानी में होते हैं, जो कि वो आपका ट्रेवल कर जाते हैं, और हम उसको एसटीआई, वो क्योंकि विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, तो वो एसटीआई को डिटरमिन करते हैं। तो नॉर्मली जो चार्ट है, आपको अगर एसटीआई आपकी लेस देन 3 आ रही है, ये इक्वल टू और लेस देन 3, तो क्लीनिंग आपको सेवरल मंथ्स में चाहिए होगी। और एसटीआई 3 to 5 है, ये आपकी मेम्ब्रेन को जल्दी फॉल करेंगी, पार्टिकल फॉलिंग लाइकली प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। और ग्रेटर देन 5 एसटीआई इट इज अनएक्सेप्टेबल। और इसके ऊपर अगर आपका एसटीआई ग्रेटर देन 5 है, यू हैव टू वर्क ऑन द प्री ट्रीटमेंट, and your whoever is your OEM, your equipment supplier, or if you are designer, try to design a good pre-treatment so that you can have STI less than 5. We will cover it in a preceding slide that how we can do it. STI measure करने के लिए it is a time based measurement. इसके लिए हम जो सैंपल कलेक्ट करना होता है उसके लिए टाइम है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, एंड दिस इज अ फॉर्मूला। आपको जो चीजें चाहिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि ये एक एसटीआई किट की कंपोजिशन है, कि आपने इसमें एक प्रेशर रेगुलेटर वॉल लगाना है, 2 बार प्रेशर देना है, और इसके बॉल है, प्रेशर इंडिकेटर है। यहाँ पे आप मिलीपोर का 0.45 माइक्रोन के फिल्टर से पानी पास करते हैं, और नीचे आप 500 ml के ग्रेजुएटेड सिलेंडर में पानी को पोर करते हैं। अब आप टाइम मेजर करते हैं कि ये सिलेंडर कितनी देर में फिल हुआ है, 500 ml का जो हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, तो उसकी बेस के ऊपर हम एसटीआई 5 मिनट्स में, एसटीआई का तो रेंज 0 to 20 होगा, अगर 10 मिनट्स में कर रहा है तो वो उसका एसटीआई का रेंज 0 to 10 होगा। मोस्ट हमें जो चाहिए होता है 15 मिनट्स में, क्योंकि 0.45 माइक्रोन का है, वो स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी उसमें। तो जितने टाइम बेस्ड ये मेजरमेंट है एसटीआई की, एंड दैट इज द फॉर्मूला in the apparatus which I have shown you. You can make it as practice if you are operating the RO plant. You must check the STI of the feed water. It is the sample you should collect from after the cartridge filter housing, which is being fed to the membrane. That should be the water whose STI should be determined. Now, there is an other term which is used, that this is a membrane, and this is the product side, and this is the reject side. That's the concentrate flows, which is sent to the drain, and that's the permeate or the product flow. Now, recovery, I have already explained you the product water divided by the flow, feed flow into 100, and the salt passage, यदि आपके साल्ट कितने प्रोडक्ट में जा रहे हैं, साल्ट पैसेज इन टर्म ऑफ परसेंटेज, परमिएट सॉल्ट्स अप divided by the feed salt into 100, that give you the salt passage.
एंड द सॉल्ट रिजेक्शन परसेंटेज में अगर आपने मॉनिटर करनी है तो वो, तो अगर हम फीड को 100 लेंगे तो -6 करेंगे तो वो प्रोडक्ट वाले सॉल्ट को करेंगे तो वो आपके पास सॉल्ट रिजेक्शन आ जाएगी।